Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Science for Everyone. Today I have brought a new tutorial video series that is related to HIV virus, which means the abbreviation is the human immunodeficiency virus. I will explain this virus in simple and conceptual way. In this video tutorial series, there are about 11 parts, and in these parts I will discuss about the different aspects of HIV. First of all, I will discuss the main structure of HIV. After that, the evolution and how which cells it infect in the body, inside the body. And after that, the mechanism of infection and the symptoms, the treatment, the diagnosis, and the medications that are used. And at the last, I will discuss some important questions that are mostly asked by the public related to HIV. So this is a simple overview of my this tutorial video series. I'm trying to make this series very simple and conceptual so that if everyone should come to know that what really HIV is, because nowadays this is a very alarming issue that the infection rate of HIV is increasing day by day. तो आप मेरे इस ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज के हर पार्ट को देख लें, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से इसको बनाया है और बहुत सिंपल तरीके से बनाया है, ताकि एक 9th स्टैंडर्ड एक 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी इसको देख ले और उसको सही तरह समझे, क्योंकि इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग इशू नाउ आजकल बहुत अलार्मिंग इशू है, क्योंकि इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा हुई है। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द मेन स्ट्रक्चर ऑफ HIV के। अगर पहले मैंने इस पार्ट को इसलिए रखा कि हम अगर हमारे जहन में इसका एक स्ट्रक्चर आ जाए, so then we will understand the other parts of this video as well. So let's start with the lecture. Okay, this is a simple structure of HIV. ये जो इस तरफ ये जो स्ट्रक्चर है, ये तो एक एनिमेटेड पिक्चर है, but this one picture is mainly a microscopic picture and very resolved picture है। ये हमारे साथ बॉडी सेल है। कौन सा बॉडी सेल है? आई वांट टू टेल यू कि ये बेसिकली हमारे साथ टी हेल्पर सेल है, जो हमारे इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है। आई विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ टी हेल्पर सेल के ये क्या होता है, क्योंकि मेनली जो वायरस है इसको इन्फेक्ट करता है, ठीक है। और ये वाले जो है, दीज आर बेसिकली द HIV, मैच्योर फॉर्म ऑफ HIV। तो ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है। मैंने इसको इसलिए आगे रखा क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सा इसको समझे कि बेसिकली ये माइक्रोस्कोप में किस तरह नजर आता है। और मैं एक बात बता दूं कि जो हमारे साथ ये ब्लैक ब्लैक जो डॉट है, तो ये इमेच्योर HIV है, दे आर नाउ स्टार्टिंग टू मैच्योर। और ये जो हमारे साथ ये सेल है, ये हमारे साथ टी हेल्पर सेल है मेनली, ठीक है। और ये जो वाला ये जो है, दिस इज बेसिकली एन एनिमेटेड पिक्चर। ओके, so let's start with the detailed structure of HIV. पहले first you have to keep this in mind that जो first discovered in 1981, पहला केस जो आया था 1981 का, as in the result of an infection by human immunodeficiency virus। जो पहला केस आया था वो 1981 में था, एक बंदे को लगा था, and he was then diagnosed with HIV, ठीक है। एक दो तीन स्टेप जहन में याद रखें कि ये पॉजिटिव स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। इसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो RNA है और पॉजिटिव स्ट्रैंड है। व्हाट डज पॉजिटिव स्ट्रैंड RNA मींस? वो RNA that can directly produce प्रोटीन, ठीक है। ये एनवेलप्ड है और इसका जो फैमिली है वो रेट्रोविरिडाई है। इसका मतलब ये है कि ये इसके जो इसके अंदर एक एंजाइम होता है, इट इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। व्हाट इज इन इट्स फंक्शन आई विल डिस्कस इन द लेटर वीडियोस, but keep this in mind that in this RNA virus, it is enveloped and it belongs to the family Retroviridae. Now this is the main structure of HIV। कि HIV का एक एनिमेटेड पिक्चर है कि क्या है, एक डिटेल पिक्चर है।
ठीक है, इसके और डिटेल पिक्चर्स भी है जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन्स को दिखाया गया है, बट आई एम डिस्कसिंग दिस क्योंकि इस लेवल पे ये बस सिंपल आपको ये समझना चाहिए. आई विल स्टार्ट फ्रॉम द अबव, फ्रॉम द टॉप. Basically, the main diameter of the virus is 10 to 140 nanometer, or we can say 0.10 to 0.14 micrometer. तो MCQs के लिए you want to remember it के MCQs के लिए याद रखें कि इसका जो रेंज है वो 100 से 140 नैनोमीटर के दरमियान है. ओके, I will start from here. This is the glycoprotein 120 and it is enveloped. Okay, GB means glycoprotein and 120 means that 120 kilodalton. Okay, 120 kilodalton इसका साइज है. ये याद रखिए, ये ज्यादातर डायग्राम में इसको मेंशन नहीं किया गया है, but this 120 means that 120 kilodalton. Okay, kilo 1000 and dalton is the 1000 dalton, so 1000 or 120,000 dalton. Okay, it is the size of this glycoprotein and it is basically enveloped. ENV means enveloped. जो इसका जो आउटर एनवेलप है ये बेसिकली इसके एनवेलप में इनकॉर्पोरेट हुए होते हैं, इन्वेजिनेट हुए होते हैं. So these are basically enveloped glycoproteins. The second one is we have discussed this part. Now the second one is this part. Okay, so this is the GP41 and it is also envelope virus. GP means glycoprotein and 41 means 41 kilodaltons envelope. Okay, now we will discuss the protease. What does protease? This is an enzyme, and what is in its function? I will discuss only a single function of it, and in the later videos, then we will discuss in detail that what does protease do. But simply keep this in mind. It is inside the core, the nuclear core of the virus, and this is an animated picture of the protease. What does protease do? When a new virus is synthesized or when the messenger RNA of that virus is translated into protein, so it cut down that proteins into different parts which then perform different function. तो प्रोटीन के कटिंग में और उसको एक खास जो है एक खास फंक्शन में रोल करने के लिए एक बेसिकली उस प्रोटीन को कट करने के लिए उसको फंक्शन बनाने के लिए प्रोटीएज एंजाइम का इस्तेमाल होता है. सो कीप दिस इन माइंड. वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल इन द लेटर वीडियोस. ओके, here the red one is the single stranded HIV RNA. This red color, this one and this one, these are two strand of single stranded HIV RNA. As I have told you that it is the nuclear material inside an HIV is RNA. Okay, so two strand of RNA is there inside an HIV. Okay, this one we have discussed this one. Now integrase is also an enzyme. Here this crescent type is the integrase is enzyme and its function is that when the RNA when it infect a cell, अगर जब ये सेल को इन्फेक्ट कर ले और then it releases, first it enters the cell and after that it releases its nuclear material, and then after that when it is converted into DNA, we will discuss it in detail, but just keep this in mind. It is used to incorporate its nuclear material inside the host nuclear material. अपना जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो होस्ट के न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए इंटीग्रेस एंजाइम का इस्तेमाल होता है. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. In the later videos, we will discuss the detailed functions of integrase. Now here is the main part, the reverse transcriptase. It is a very much that major enzyme that is present in the inside the HIV. So reverse transcriptase that is used in the conversion of RNA into DNA, and it has also many functions, and we will discuss it also. So reverse transcriptase is an enzyme that is used to convert the RNA into DNA, where the RNA of these viruses are first converted into DNA, and after that these are incorporated inside the nuclear material of the host.
So keep this thing in mind. This is the reverse transcriptase. Reverse transcriptase means it reverses it converts the RNA into DNA. Just keep this thing in mind. Okay. Now here come the P17 gag. Okay. So keep this in mind. What does this gag means? Gag means group antigens. Okay. Gag means group antigen, and P17, P means protein and 17 means 17 kilodalton. Okay, so these are known as group antigens. uh, what does it do? It mainly give a protective layer to the HIV virus. तो इसका ये function है mainly. P17 means protein and it is 17 kilodaltons. Okay, it is also known as, this gag means group antigen. Okay, after that here come the core. This all is the core of the HIV, and it is also known, these proteins, that round shape proteins, are also known as, when they are combined, so they form a nucleocapsid. It is also known a nucleocapsid, and this is basically the core. Okay, so after that, MHC class 2, MHC class 2 molecules. So keep this in mind that MHC class 2 and MHC class 1, don't be confused here, because basically this MHC class 1 and MHC class 2 molecule are basically present on the normal cells of the immune system. Okay, we all know that it mainly is present in it is mainly present. Okay, sorry for the interruption. Okay, so this MHC class 2 and MHC class 1 molecule, these proteins are basically present on the immune system of the host cell. We all know that MHC class 2 जो है ये basically dendritic cell में और antigen presenting cell में जो macrophages है उसमें these are present on it, and these MHC class 1 molecules are basically present on all the nucleated cells of the body. लेकिन यहाँ ये इधर क्या कर रहे हैं, इट बेसिकली ये जो HIV है, जब ये एक मैक्रोफेज को और बेसिकली एक टी हेल्पर सेल को ज्यादातर इन्फेक्ट करते हैं, तो जब वो उनसे निकलते हैं, सो दीज बेसिकली टेक द MHC class 2 and MHC class 1 molecules with them. एक्सीडेंटली ये अपने साथ ले लेते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको इस डायग्राम में बता दूं, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है, और ये हमारे साथ टी हेल्पर सेल है. ओके, टी हेल्पर सेल. So we all know that these MHC class 1 and MHC class 2 proteins are present on the we can say class 1 and class 2. These are basically present on the cell of the body. So ये क्या करते हैं, अगर हमारे साथ एक HIV वायरस है, I will denote it on the इस तरह मैं डिनोट करता हूँ. जब वो मैच्योर हो जाता है और वो बाहर की तरफ निकलता है, तो क्या कर लेता है, ये सेल का कुछ मेम्ब्रेन पार्ट, सेल मेम्ब्रेन जो लिपिड बाइलियर है, ये अपने साथ लेके जाता है in order to bud off from that cell. तो क्या हो जाता है, इट ऑल्सो व्हेन इट टेक्स दीज, फॉर एग्जांपल ये जो हमारे साथ वायरस है, ये पार्ट जो इधर से बड ऑफ हो रहा है, तो इसने ये पार्ट इतना पार्ट अपने साथ ये एक एनवेलप के जरिए एक एनवेलप के तौर पर ले रहा होता है. तो ये MHC क्लास 2 और MHC क्लास 1 भी इसी के साथ चले जाते हैं, ठीक है. तो ये इस तरह लगता है कि इसके ऊपर इनकॉर्पोरेट हुए हैं, लेकिन नॉर्मली ये इन पे प्रेजेंट नहीं होते. जब ये बाहर निकलते हैं तो ये एक्सीडेंटली अपने साथ ये ले लेते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होता. बेसिक जो स्ट्रक्चर है HIV का, तो इसमें ये नहीं होते, ये एक्सीडेंटली ये अपने साथ होस्ट सेल से लेते हैं व्हेन इट बड ऑफ फ्रॉम दैट होस्ट सेल, ठीक है. तो यहाँ तक MHC क्लास 2 और MHC क्लास 1 का आपको पता चल गया होगा. नाउ हियर कम द P protein 7 gag group antigen. It is these are the proteins, ठीक है. These are the proteins that are used in the stabilizing the nuclear material of the
वायरस, ये इसलिए भी यूज होता है। और हमारे साथ ये जो छोटे छोटे ब्लू कलर के जो न्यूक्लियोकैप्सिड के प्रोटीन्स है, ये भी बेसिकली प्रोटीन है, और इसका भी अलग सा P24 और P27 इस तरह के नंबर होते हैं। लेकिन ये एक डिटेल पर आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये जहन में याद रखें, अगर अगर आप दूसरे डायग्राम्स देखें तो उसको भी इसने प्रोटीन का एक नंबर दिया हुआ है। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज प्रोटीन, ठीक है। And the last one is the lipid bilayer. So keep this in mind, this is the lipid bilayer of the host, ठीक है। ये जो बड़ो फोरे होते हैं, तो ये अपने साथ, मैंने पहले भी कहा, ये होस्ट का जो न्यू सेल मेम्ब्रेन है, ये ले जाते हैं, ठीक है, अपने साथ। जो जब ये बड़ो होते हैं तो ये लिपिड बाइलेयर है। तो ये होप आई यू अंडरस्टैंड दिस द स्ट्रक्चर ऑफ एन HIV वेल, कि HIV असल में इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। इसके और बहुत से डिटेल स्ट्रक्चर है, जिसमें छोटे छोटे प्रोटीन को भी उस डिफरेंट बुक्स में और रिसर्च आर्टिकल में पॉइंट आउट किए होंगे। लेकिन मैं इसलिए ये जो बहुत ज़्यादा एथेंटिक पिक्चर मैंने ली है एक बुक से, कि ये बेसिक स्ट्रक्चर, अगर आप इसके फंक्शन को और इसके एंजाइम्स को और इसके प्रोटीन को समझे, तो ये बिल्कुल काफ़ी है आपके समझने के लिए और आगे लेक्चर्स को समझने के लिए। तो ये होप यू अंडरस्टैंड कि GP120 क्या होता है, GP41 क्या होता है। तो in the next video I will discuss about the different aspects of HIV. Hope you understand this video well. If you have any question in your mind, you can ask me in the comment box related to the structure of the HIV, or if you want me to make a video over an HIV structure which is in very detailed form, then so I can also make it over it. बट बेसिकली आप जहन में याद रखें कि ये जो सीरीज मैं चला रहा हूँ, ठीक है, सो ये बेसिकली मैं एक आई वांट के सारे अक्सर लोग इसको समझे, क्योंकि ये 9th स्टैंडर्ड के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के इसको समझे, ताकि इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में उनको पता हो। जो प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं, जो डिफरेंट एंजाइम इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, इसके फिर डिटेल फंक्शन क्या है, वी विल डिस्कस इन द लेटर वीडियो। फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।